ये देखिए करी एकदम बनके रेडी है। आप चाहें तो और थोड़ा ड्राई कर सकते हैं, मैं इतना ही रखूँगी। और ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे अच्छा फ्लेवर के लिए। तो अगर आपको ये वाला आलू गोभी की करी विदाउट ऑनियन गार्लिक अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।